हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेदांत पॉडकास्ट। और आज काफ़ी एक स्पेशल एपिसोड होने जा रहा है। और आज के एक स्पेशल गेस्ट है जो मेरा भाई है, करांशु सर इज हियर विथ मी। हाउ आर यू सर? I'm very fine. काफ़ी बढ़िया एपिसोड रहने वाला है ये। जस्ट बिकॉज कि आज के दिन वेदांत क्लासेस के लिए जो एक स्पेशल इवेंट होता है, दैट इज वेदांत प्रीमियर लीग सीजन 2। ओके, जिसके मैचेस जो है वो आज से स्टार्ट होंगे और 2 दिन तक लगातार कॉम्पिटिशन्स बने रहेंगे, जिसमें 8 मेंस टीम है और 4 वुमेन्स टीम है। तो उनके बीच एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि आपके इमोशंस क्या है अभी? इमोशंस जो है वो बहुत हाई है। अभी बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो खेलने वाले हैं, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे, क्या उनके टैक्टिक्स रहेंगे, क्या डिसीजन मेकिंग रहेगा। क्योंकि वैसे हमने बहुत देखा है उन लोगों को एडवाइस देते हुए इंडियन क्रिकेट टीम को। तो आज पता चलेगा जब वो लोग खेलेंगे तो किस तरह से खेलने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि इस बार हमने मेंस और वुमेन्स टीम्स को भी अलग कर दिया है और थोड़ा लंबा लीग फेस भी चलने वाला है, क्योंकि हमने 2 दिन तक चलानी है टूर्नामेंट। तो इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो जो लास्ट संडे हमारा ऑक्शन हुआ था। इस साल ये भी एक ऐड ऑन किया है हमने विधान प्रीमियर लीग में, कि हमने इस साल टीम्स जो है वो हम एज ए टीचर या एज ए मेंटर या एज ए कोच जो भी बोलो, वो हमने डिसाइड नहीं किए, राइट? तो लास्ट वीक हमने उसके लिए भी एक ऑक्शन किया था, लाइव ऑक्शन हुआ था जो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। सो वी कंडक्टेड द वी गिवन द चांस टू स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट देयर ओन टीम थ्रू दैट ऑक्शंस। तो लास्ट वीक ऑक्शन भी हुआ था और आज हमारे सामने सारे ट्रॉफीज भी है। तो देखते हैं कि किसके हाथ में, कौन सी टीम के हाथ में कौन सी ट्रॉफी जाती है, एंड कौन से स्टूडेंट्स है वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऑक्शन के रिलेटेड आपका क्या ख्याल था? पहली बार जब आपने बताया ऑक्शन तो मुझे तो शौक ही लगा था कि ये तो हम कैसे ही कंडक्ट कर पाएंगे। बट एक चैलेंज था और चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया था, हमने एक्सेप्ट किया था। और उसी के साथ पूरा सिस्टम जो है वो हमने सेट किया, बच्चों के पास से उनकी डिटेल्स ली रिगार्डिंग देयर प्लेयर प्रोफाइल, कि वो क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। जिससे हमें एक शीट बनाने में, एक प्लेयर का जो ड्राफ्ट होता है वो प्रिपेयर करने में आसानी हो गई। और उसी तरह से हमने प्लेयर्स को डिवाइड भी कर दिया और बहुत अच्छी तरह से प्लेयर्स को हमने रूल्स भी समझाए थे कि ऑक्शन हम कंडक्ट करेंगे तो कितना पर्स रहेगा उनका, बजट जैसी चीजें जो है वो प्लेयर्स को समझने में आई कि किस तरह से टीम को बिल्डअप किया जा सकता है। तो जब भी मैंने ऑक्शन का सुना था तो एट फर्स्ट ये मुझे लगा था कि थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट फिर जब एग्जैक्टली हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो बहुत मजा आया। तो जनरली ऐसा रहता है कि सबको ऐसा लगता है कि कोई भी लीग क्रिकेट है, ओके, सो इट इज अबाउट क्रिकेट, और हमने इस साल ऑक्शन भी किया है। सो इट इज लाइक कि एवरी टीम इज प्लानिंग देयर ओन वे। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो ऑक्शन कितने, यू कैन से, अमाउंट में उनको लाइफ में हेल्प करेगा? बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, मेरा तो ऐसा मानना है। बिकॉज़ हम ये भी बिलीव करते हैं कि भाई नॉलेज जो है वो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। इसीलिए जो बच्चे हमारे क्लास अटेंड करते हैं वो तो ये बात को मानेंगे भी, क्योंकि हम बहुत सारे बियॉन्ड द बुक्स जाके एग्जांपल्स उनको देते हैं, समझाते हैं रिगार्डिंग देयर प्रैक्टिकल लाइफ। नो डाउट ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया है वो काम का नहीं है, बट अलोंग विद दैट उनको और भी चीज़ें चाहिए होंगी। डिसीजन मेकिंग जो है, एक मैनेजमेंट स्किल्स जो है, या एक प्रिमाइसेस के अंदर रहना है। हमने अगर उनको ये ऑक्शन जैसे कंडक्ट किया और एक प्लेयर्स को पर्स दे दिया है, तो हमने उनको एक बाउंड्री दे दी कि ये बाउंड्री के अंदर ही आपको रहना है। और उस बाउंड्री में उन लोगों ने एक्ट किया, टीम बनाई, तो ये एक स्किल सीखी उन्होंने। फ्यूचर में नो डाउट सब बहुत सक्सेसफुल रहेंगे ही, बट फिर भी एक बाउंड्री के अंदर रहना उनको सीखना पड़ेगा कि भाई एक ऐसा टाइम अगर आता है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो शायद ये एक्सपीरियंस उनको तब हेल्प करे। तो काफी बढ़िया तरीके से समझाया आपने कि कैसे सारी चीजें जो है, जो ऑक्शन से बच्चों ने सीखी है, तो कैसे वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके भी फ्रूटफुल थिंग्स है वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। तो वही चीज लाइफ में आगे उनको काम आएगी। So since last 15 days, you've seen
many things like we have prepared a form sheet, we have drafted the players, and then we have planned that the auction will go live through the YouTube streamings. After that, we have made the draw using that spin wheel. Okay. After that, we have planned the team sheets and against whom they're gonna play. And after that, we have also planned that during the live streaming they can watch the scorecard. So after all these things, what do you think about this VPL season 2? How it gonna be? It is going to be as similar as IPL, I would say, because everything that IPL does, we have tried to do it at our level. Obviously, the broadcasting rights are not with any Hotstar, or Sony Live, but it is only with Vedant classes, and you can watch it live on our YouTube channel. The most important and exciting part is this won't be only something that you are watching. There will be scores displayed, which will be updated. And if I can talk about it, is the rule which we have implemented about the 2 overs that we are going to give them special. So that is very exciting thing here, and about everything which we have arranged, right from thinking about VPL to coming today, where it is going to be implemented. Every step had its own challenge, and fulfilling it gave its own, what you can say. It tastes good when you overcome the challenge. So you were the host during the auction time, and I was handling all the backstage challenges. Okay, I was going through that slides and everything, player sheets and all, and you were the host during that time. So what was the you can say awful moment during that auction time that you can cheer it up? One of the moment I remember is obviously as a host, when there were 8 to 12 teams who were bidding for the players. So we know the overall purse that we have given to them, but we do not remember that how much purse is left with them. We were trying to display it on the screen, but while the bidding is going on, I do not exactly remember. So I was watching two teams fighting for a player. I do not remember the player name, but the player belonged to the silver category. So the increment was of 2000 Vedant points each after each bid. So they kept on bidding. Both the teams were very firm on getting the player in their team sheet. But at one point, the other team stopped. And then I was wondering that, okay, the bid was not that high that the team can stop at that point. But then once the player was drafted to the other team, and when we opened the sheet, and when I looked at the budget, the team was completely aware about it. That okay, they had some around 81,000 left in the purse, and they left the bid for 80,000 Vedant points at last. And when the other team bid for 82,000, they stopped because they were aware about their purse. So that was something which I liked very much. So true, so true. I also recall that moment. Actually, that was a more अमेजिंग पार्ट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो गर्ल्स ऑक्शन के टाइम हुआ था. ये जो इंसिडेंट था वो गर्ल्स ऑक्शन के टाइम हुआ था एंड दे वर रियली अवेयर अबाउट देयर ओन पर्स दैट हाउ मच bid they need to make during the each player. So my question will be within classes you need to describe or within classes not as a form of coaching class. So then how would you describe it? Uh, See, it is the NEP which has come, NEP 2020. It focuses on the overall development. So we always try to improve our standards and try to match whatever is required to bring out of the student. Not only the bookish knowledge, but also apart from it. This is the season 2 for Vedant Premier League, but I also recall we conducted some indoor games tournament before 3 years. There was the chess tournament that took place. There was the carom tournament. So we have always focused, along with the studies, we have always focused on sports as well. Not only sports, but then during our lectures, we have guided them some life lessons as well. So once any student tries to become part of Vedant classes, they obviously would go along in the life. It is not that I'm just saying it for the sake of saying.
But then those students who would be watching this live would be feeling that yes, because many of our students have settled abroad, right? And those who have joined us maybe from 6th standard or 7th or 8th standard have been with us till 12th standard. Now that itself is an evidence of we have been justifying with whatever we promised you. Once you come to our place and once we talk to you, whatever we commit, we have been able to fulfill it. Otherwise, no student would continue till 12th standard. Yeah, if they have shifted out of the town or if there's any other issue, then it is understandable. But if they have joined Vedant once, they will be there till they are studying. Okay, so today we are gonna starting with the Vedant Premier League Season 2. तो आज जो हमारे मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, so सारे मैचेस नॉकआउट रहेंगे. तो what message would you like to give to all the captains and the star players? See, my message is very simple. You are in a sport, and obviously, at the end of the day, only one team will be able to lift the trophy. Now, that does not mean that you are not good enough. It might happen that it was just not your day, but you need to play with the 100% sportsman spirit. You need to respect everybody around. You need to respect your own team players, your opponents, umpires especially, or anybody who is part of the Vedant Premier League. Your respect will last long basically, because maybe 5 years down the line, I don't think you would be remembering how many runs you have scored, but there are chances that you will remember that memory, that okay, this was the team that we played against, or this is how we played, and everybody was happy and enjoying. So yeah, you can sledge, obviously, that is very very key part of it. If my friends would be watching this video, they would not let me go, because they know I do not let any player move around without sledging. That is one of my good tasks. But that does not mean that I disrespect them. I respect them. At the end of the day, we shake hands and it's all smiles. I was right. I faced so much of sledging from him when we used to play together or against each other as well. Okay, so one message you would like to say to the parents who trusted the two young brothers uh, for their children's dreams and education. Uh, I cannot give any message, but I would rather be grateful and thankful for trusting us. And we are trying our best to stay true to whatever we have committed to you, and make you feel proud by improving your child's result. All right. See, there has been so many questions, बहुत सारे क्वेश्चन केवल सर ने मुझे पूछ लिए हैं. तो बड़े भाई होने के नाते अभी मेरा भी हक है ना कि मैं भी थोड़े क्वेश्चंस केवल सर को करता हूँ. तो अभी मेरी बारी है कि भाई मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर में रिवर्स रोल कर देते हैं. बहुत सारे आंसर मैंने दे दिए, तो अब केवल सर की बारी है.